हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट सहज सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सो सहज सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जिनके ऑफिस पुणे में है। मैं पुणे में इंटरव्यू दिया था, बाकी और भी लोकेशंस में है, यू कैन सर्च फॉर इट। बाकी द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद सहज एंड लेट यू नो व्हाट आर राउंड्स यू कैन एक्सपेक्ट, देन हाउ यू कैन क्रैक दिस राउंड। ऑल्सो आई वांट टू लेट यू नो कि अगर इफ यू आर अवेयर अबाउट थॉटवर्क्स, इक्वल एक्सपर्ट्स, देन सहज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज अ कंपनी व्हिच इज इन सिमिलर लाइंस। ठीक है, इट्स अ गुड सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, मैंने थॉटवर्क्स में काम करा है, मुझे पता है कि इन कंपनीज में द मेजर फोकस इज नॉट टू नो समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स और नॉट टू बी वेरी स्मार्ट डूइंग BSA and all that thing, but the major idea of these companies is to hire those people who know how to write good code, clean code, more maintainable code. ठीक है, so the major focus is on writing clean code with unit test, integration test and so on. ठीक है, so start करते हैं इस कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। so जो राउंड्स होते हैं इनके पास, इनका एक कोड पेयरिंग राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है एंड देन द HR राउंड। ठीक है, अब मैं बता दूं कोड पेयरिंग राउंड होता क्या है। ठीक है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, टू सिमुलेट हाउ कोड पेयरिंग राउंड लुक्स लाइक। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि हाउ डू यू अप्रोच कोड पेयरिंग राउंड। बट लेट मी टेल यू व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस राउंड। ठीक है, तो बेसिकली कोड पेयरिंग राउंड कैन बी डन इन 2 ways। जब तक वो कोविड के बाद रिमोट वाला स्ट्रक्चर था, तब क्या होता था कि पीपल यूज्ड टू, लाइक कंपनीज लाइक दिस यूज्ड टू गिव यू अ कोडिंग असेसमेंट एंड वंस यू कंप्लीट दैट, सबमिट दैट, द नेक्स्ट राउंड वुड बी कोड पेयरिंग ऑन द सेम असेसमेंट। बट अभी क्या हो रहा है, नाउ द थिंग्स आर नॉर्मल। तो you will be called in their offices and then you will be required to pair with one of their employee and you have to solve that problem in front of him। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको अराउंड 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, व्हेन यू आर इन ऑफिस आपको 2 घंटे मिलेंगे। यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक PDF दिया जाएगा जहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा होगा बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में। आपको टेस्ट केसेस दिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया जाएगा एंड यू विल हैव योर इंटरव्यूअर इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ पे यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, आपको कुछ भी क्वेरीज आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, एवरीथिंग यू कैन आस्क। द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट वेल सो दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा कोड नहीं होता है। ठीक है, यू डोंट नीड टू यूज एनी फ्रेमवर्क और डेटाबेस और REST APIs, nothing like that. You have to write plain simple Java or Kotlin or whatever language you are using, plain code. ठीक है, the whole point of this round is to evaluate you on the basis of how well you write code. ठीक है, given a problem statement, whether you are able to break them into smaller objects, real world objects, right? आपके क्लासेस आप डिफाइन कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर पा रहे हो, बेसिक सॉलिड प्रिंसिपल्स, उस प्रिंसिपल अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, हाउ वेल यू आर राइटिंग कोड, यू नो हाउ टू रीयूज कोड, मॉड्यूलर कोड आप लिख रहे हो, आप जो पैकेजिंग बना रहे हो सर्विसेज के वगैरह वगैरह, वो आप कितने अच्छे से लिख रहे हो, आर यू फॉलोइंग द कन्वेंशंस, नेमिंग कन्वेंशंस एंड अदर क्लीन कोड एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज इवैल्यूएट की जाता है। साथ ही साथ दे ऑल्सो सी हाउ यू आर अप्रोचिंग दैट प्रॉब्लम। सो व्हेन यू आर राइटिंग कोड, व्हेन यू आर बेसिकली एक पूरा, मतलब मान लो कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो कैसे आप किसी से डिस्कस करके चीज को इंप्लीमेंट करते हो, राइट? व्हेन यू आर पेयरिंग on something with someone, you have to explain कि what you are thinking and how you are going to approach that problem। ठीक है, so उसमें भी, इसमें भी सेम होने वाला है कि आपके पास इंटरव्यूअर है एंड यू विल बी डिस्कसिंग कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम को इस वे में सॉल्व करूंगा, आई विल हैव टू बेसिकली सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, एंड इफ ही अग्रीज ही विल आस्क यू टू राइट इट डाउन, और इफ ही हैज सम क्वेश्चन कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, देन ही विल गिव यू हिंट्स, यू हैव टू कैच इट एंड देन यू हैव टू काउंटर इट कि हाँ अच्छा ऐसा होगा तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, थिंग्स लाइक दैट, राइट? एंड ऑल्सो द अदर एस्पेक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज राइटिंग यूनिट टेस्ट। इफ यू नो TDD, you can follow test driven development. If you don't know, then you can simply write your code and then write your test. But coverage is important. Like you have to write tests for every line of code you have written. ठीक है, and yeah, this also shows that you know testing, how to write testable code and then how to write unit test and integration test around it. ठीक है, so ये पूरा फोकस होता है इस राउंड का, जहाँ पे you'll be spending around 2 hours and your question might have multiple requirements, like multiple feature implement करने को हो सकते हैं, but not necessarily you have to complete all of them। हो सकता है कि out of 5, out of 4 you are able to solve 2, 3, that is fine। The whole point here is to understand how you are approaching the problem and how well you are able to solve it using basic principles। ठीक है, so ये राउंड काफी easy होता है उनके लिए जो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं, जो थोड़ा इसके बारे में पढ़ के जाते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह ब्रशअप करा है, जिन्होंने डेली कोडिंग करा है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, देन दिस राउंड विल बी वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद होता है टेक्निकल। ठीक है, दिस टेक्निकल कैन बी कैटेगराइज्ड इन वेरियस वेज डिपेंडिंग अपॉन योर seniority level. So it could be a software engineer role, it could be a senior software engineer role, it could be a lead role. But in case of Sahaj, I don't think that they follow such tech lead, senior software engineer, ऐसे वाले designation they don't follow. They basically follow a
रोल आई गेस सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, ठीक है, सॉल्यूशन कंसल्टेंट, ऐसा कुछ डेजिग्नेशन दे बेसिकली फॉलो. तो बट स्टिल लाइक दे नो बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस एट व्हाट लेवल दे वांट टू इवैल्यूएट यू, ठीक है. इट कुड बी फॉर अ लीडरशिप पोजीशन, इट कुड बी फॉर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन, ठीक है. बट द होल पॉइंट इज दैट दिस टेक्निकल राउंड विल रिवॉल्व अराउंड दैट, ठीक है. इफ इट इज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, then mostly they'll be talking about your current project, current experience, and how well you know your project, right? Not just your contribution, your way of writing code, or what you have built till now, but also they would like to understand कि आपको end to end चीजें पता है कि like starting from development till the deployment, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं. They'll also try to evaluate you on certain depth. मान लो कि आपने Kafka करा है या मान लो आपने Spring Boot करा है, तो they'll try to go deeper into it. They'll try to see how well you know that particular tech, and that will basically help them to evaluate you on your technical depth, ठीक है. So ऐसे कंपनीज में ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है to evaluate a candidate. Plus, if you are at a technical level, like based upon the interviewer, you will also be asked a system design question. This could be what? This could be anything what you see in different questions, like design Instagram, design Twitter, design IRCTC, ऐसे वाले questions, right? But the main focus here is that given your senior level or tech lead level, the expectation here is that how well you understand that problem, because जो भी problem statement होगा ना, it would be very vague, very open ended, right? You have to ask a lot of questions, you have to clarify the requirements कि क्या करना है, and you also have to have this in your mind कि this round is about 45 to 60 minutes, and you have to scope your requirement in such a way कि आप वही focus करो and उसको complete करो, right? You also have to ask about functional requirements, non-functional requirements. Then you might, like let's say you are being interviewed at a tech lead level, right? You might be required to talk about your tech stacks you are choosing, right? So इसमें मेरे केस में क्या हुआ था कि there was 2 person basically, one was from leadership position and one was from some senior engineer, ठीक है. तो उसमें क्या हुआ था कि the senior one was acting as a client, ठीक है. He was playing a role of a client, and then he bring a requirement कि मुझे ये चीजें बनाना है, and then you tell me कि how to approach, and he also came up with a deadline कि 3 months में बनाना है. Then you discuss general things like कि आपके पास client अगर आता है एक requirement लेके, and they try to give you a scope कि ये these are the requirements I want to do, and I want to do it in 3 months or 6 months, right? So here you have to discuss in that way, जहाँ पे you have to also understand, like you have to come up with the estimation, you have to come up with the number of employees required, you have to come up with the entire plan कि वो कैसे आप डिलीवर करोगे. एंड बहुत ही ब्रीफली बोलना पड़ता है, मतलब जस्ट टू शो योर expertise in this field. अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो, then you should be able to handle such conversation. But here the major focus is that how well you are understanding the requirement and breaking down into domain objects, and then you are giving them a high level design and a low level design, ठीक है. जहाँ पे you will be creating the basic flow, right? Let's say if you are creating a book my show, then entire workflow की कैसा होगा, like user coming on your application, choosing a theater or a movie, and then see it, and then doing the payment, right? All this, the workflows लिख के you create a high level design, what all things you'll be doing, what all services will be there, which all services will take care of which all functional requirements, ठीक है. How will you take care of the non functional requirements, scaling कैसे करोगे, अगर कोई heavy read application है तो कैश वगैरह कैसे यूज करोगे, ये सारी चीजें. तो सिस्टम डिजाइन में मोस्टली ये बहुत ही बेसिक है. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन सिस्टम डिजाइन, यू कैन चेक देम आउट टू अंडरस्टैंड कि ये राउंड में बेसिकली क्या पूछा जाता है. बट माई होल पॉइंट हियर इज टू लेट यू नो कि यू माइट एक्सपेक्ट अ सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे यू हैव टू हैव अ सॉलिड नॉलेज टू क्रैक दिस राउंड. सो या दिस वाज अबाउट द टेक्निकल राउंड. एंड इसके बाद था एचआर राउंड. सो एचआर राउंड में बेसिकली आप अपना ऑफर नेगोशिएट करते हो, ठीक है. जो भी ऑफर होगा, लाइक बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, योर अंडरस्टैंडिंग, यू विल बी नेगोशिएटिंग योर ऑफर, एंड बस दैट्स इट. ये 3 राउंड्स होते हैं मेजरली, ठीक है. आई होप आई एम एबल टू प्रोवाइड सम वैल्यू टू दिस वीडियो. आपको अगर ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यू कैन ब्राउज माय यूट्यूब चैनल टू लुक इनटू मोर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. सो इतना ही था आज के वीडियो के लिए. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर ले. एंड यस, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आल्सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन फॉर एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क मी, ठीक है. सो इतना ही था इस वीडियो के लिए. मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग.